हेलो गाइस, वेलकम बैक। एंड आज मैं तुम लोग को हमारे इसका सेकंड एक्सपेरिमेंट, सो द डिफरेंस सेकंड एक्सपेरिमेंट दिखाऊंगा जिसमें कैंटिलीवर बीम का हम लोग एनालिसिस करेंगे। सो द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट वाज कि उसमें दो अलग अलग क्रॉस सेक्शन है। दिस इज़ काइंड ऑफ कंपैरेटिवली ईजियर दैन द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट बिकॉज इसमें सिंगल मटेरियल है, यू डोंट हैव टू चेंज द मटेरियल एंड क्रॉस सेक्शन भी एक ही है। सो दिस विल बी अ कंपैरेटिवली सिंपलर वीडियो। एंड इफ़ यू वांट टू नो कि APDL कैसे ऑन करते हैं एंड ऑल, फर्स्ट वीडियो को रेफ़र कर लेना मेरा, एंड आई जस्ट डायरेक्टली जंप इनटू APDL। सो ये फर्स्ट वीडियो का था। आई मेक अ न्यू फाइल and yeah so this is a new file and now we have to analyze. This is our question, right? So अभी इसमें देखो लेफ्ट वाला जो एंड है दैट इज फिक्स्ड एंड इसका क्रॉस सेक्शन इज डाया 20 mm का सर्कल है, ठीक है। सो आई स्टार्ट प्रेफरेंसेस will be structural because we are performing a structural analysis. Click OK, go to preprocessor, element type, add, delete, add. Now this is again a beam element, जो last practice में किया था वैसे ही this is again a beam element and it's two noded because then we apply elements and divide it into number of nodes. So इसलिए इसको two node ही रखते हैं हम लोग and click on OK. So see, only a single element is added and now I'll close this. Element is done. Now we have to give material properties, and so for that we go to material properties, material model, structural, linear, elastic, isotropic, right? Now what is EX? In the question it's 200 GPa and mu is 0.29. So as I told ki ANSYS is dimensionless, so we have to give it as 2 into e power 11 because we have to decide the dimensions. So I am taking it as Newton per millimeter square. So converting 200 GPa to Newton per millimeter square, it gives out the value of 2 into 10 power e power 11. Okay, and the Poisson's ratio is 0.29. So I'll put it as 0.29. Now click on OK, and yeah, so the material is defined. Okay. Okay, so we have defined the materials now, right? तो हम लोग ने मटेरियल डिफाइन कर दिया. नाउ वी हैव टू गिव विच सेक्शन इट विल बी. तो सेक्शन एज वी कैन सी इट इज़ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन. सो गो टू सेक्शंस, गो टू बीम एंड इन बीम गो टू कॉमन सेक्शंस, राइट? बिकॉज अपना बीम एलिमेंट है और उसको अपने को कॉमन सेक्शंस में ही जाना है. सो कॉमन सेक्शंस में नाउ यू कैन सी इट्स जस्ट अ स्क्वायर. तो उसको चेंज कैसे करें? तो ये देखो, ये सब टाइप है ना, ड्रॉप इट डाउन, सिलेक्ट दिस सर्कल. So it will now ask what will be the radius. So our diameter is 20. Keep in mind diameter is 20, so the radius will be 10, right? Okay, so n will be 1. Okay, and this all parameters are not for us. अगर कुछ offset देना है तो it depends, but ये अभी हो गया. and n is 1 because मैंने बोला था कि last time वो एनालिसिस में कुछ ना कुछ गड़बड़ दिखा है, ठीक है. नाउ नेम आई विल कीप इट एज D20 बिकॉज इट्स डायमीटर 20 मटेरियल एंड मेरे को बाद में रेफर करना है उसको ड्यूरिंग द मैशिंग प्रॉपर्टीज, ठीक है. सो नाउ इट्स D20 एंड आई विल क्लिक ऑन अप्लाई, ठीक है. ओके कर दोगे तो भी चलेगा बिकॉज हम लोग को सेकेंड मटेरियल अभी ऐड नहीं करना है. सो क्लिक ऑन ओके एंड द सेक्शंस पार्ट इज ऑल्सो डन. नाउ वॉट यू हैव टू डू इज मॉडल, मतलब यहाँ पे यू हैव टू गिव द लेंथ ऑफ द बीम सो डैट उसको हम लोग क्रॉस सेक्शन से पूरा मैश कर सके, राइट? वो पूरा क्रॉस सेक्शन उस पर जनरेट कर सके. सो व्हाट इज़ द लेंथ? इट्स 100 mm. सो फॉर 100 mm मतलब गो इन टू मॉडलिंग, you have to first create key points or you can even create nodes. So this time we'll be creating nodes where in the active working plane. So in active working plane now it's asking for node number, right? So node number we can define it as 1 and इसका location will be here, so it will be 0, 0, 0, right? ठीक है, हो गया. Click on OK and see a white small dot has appeared and the node is created here. Now in ActiveCS again, but we have to give node number as 2 and node number 2 only x direction will change because y और z डायरेक्शन में कुछ नहीं है, बीम एलिमेंट है और स्ट्रेट है, तो ओनली x डायरेक्शन में उसका 0 से 100 हो रहा है पोजिशन एंड क्रॉस सेक्शन इज रिमेनिंग कॉन्स्टेंट. सो आई डू दिस एज 100 and now I'll click it on OK. So see, both the nodes are created
एंड द नाउ वी हैव टू गिव अ लाइन, बिकॉज वो लाइन के ऊपर मैश करेंगे तब वो जाके क्रॉस सेक्शन जनरेट होगा. ओके, सो क्रिएट लाइन, गो इनटू लाइन, स्ट्रेट लाइन. ओके, just a second. So fine. So here it's saying that these nodes which are created now, these cannot be used as lines. So for lines you have to always use key points. Okay, so what we will do is we will delete these nodes and we will do with lines only. I'm sorry, but I'll select both of these and click on apply. So now these two are deleted. See, so we'll go to our process again, go to modeling, now create key points. Now as I said last video में हम लोग ने key points create किए थे. So in key points, go in active CS and again we'll give key point number as 1 and it will be 0, 0, 0. Apply, and the second key point will be at 100. So 100 and okay. So see, both the key points are there now, and now we can create a line. Okay. From nodes also we can create lines, but I'll tell you in the next video कि वो कैसे करते हैं, because मेरे को अभी currently वो याद नहीं है. ठीक है. So go into lines, go straight line and pick these 2 points. See, your line is created. Click on apply. Yeah. So your line is done. अभी create हो गया. Now what you have to do, next step यहीं पे लिखा है meshing. So meshing में go to mesh tool. mesh tool में अभी पैरामीटर सेट करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज एक ही मटेरियल है और उसका एक ही पैरामीटर है. ओके, सो क्लिक ऑन ओके. बट ये लाइन का तुम लोग को एलिमेंट्स में डिवाइड करना ज़रूरी है. सो सी नाउ इन लास्ट प्रैक्टिकल हमने 10 एलिमेंट्स में डिवाइड किया था, बट ये प्रैक्टिकल में 10 किलोन्यूटन लोड अप्लाई हो रहा है. ठीक है, सो 10 किलोन्यूटन लोड इज बीइंग अप्लाइड ओवर दिस एलिमेंट, बिकॉज अभी अगर इसको हम लोग ज़्यादा एलिमेंट्स में डिवाइड करेंगे तो यू विल बी गेटिंग मोर एक्यूरेट आंसर, बिकॉज इट विल बी कैलकुलेटिंग नियरर टू, मीन्स जो ANSYS APDL जब कैलकुलेट करता है तो इट विल बी गिविंग नियरर रिजल्ट्स. सो एज यू इंक्रीज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स द रिजल्ट इम्प्रूव्स. सो दिस टाइम विल लाइन्स एंड click this line, click apply, and now I'll be dividing it to 100 elements. Okay, I'll click on apply. So see, now this, oh, it disappeared. So what to do? Go to plot, multiplots. See, now this is divided into 100 elements. Okay, so click OK. Now you cannot see the mesh tool wala tab. Go alt tab and see this comes, and now you have to mesh this line. So click on mesh and click on this thing. So this whole thing and click on apply. So now this line is meshed. Click on OK, go to plot and click multiplot. So you can see these white dots appear showing that this line is meshed. So since this line is meshed, now you can be able to see the cross section. So go to style, size and shape, check if cross section has appeared. Click on OK. So yeah, I'll just make it a nicer view. See, it's near circle because APDL works kind of that way. The cross section is looking this, but it is circular. Don't worry about that. So now I'll do the front view again and I'll turn this element off. Go to style, turn this off. Okay, so yeah, now the last step comes is defining the loads. Define loads. Now where are you, go to define load and go to apply. Now where are you going to apply and what are you going to apply? These were two concerns. Okay, so firstly we will be applying structural load, structural displacement where? Displacement at key points, and key points, which key point? The leftmost. So see, there is a trick. If you are not sure कि first key point select होगा या second, go to the leftmost part and click. So it will always select the first key point. Okay, if it's there for first and last, you can apply this trick. Okay, now click on apply, and what you have to do, all degrees of freedom will be set to 0 and click apply. Okay, so these this side is completely constrained. Click on OK. Go to the, now you have to apply force. So go on force, click on key points. Now which key point? So the last one. So click right side, most rightward. So it will click the most rightward key points. Okay, so now click on apply, and now in this case it's not in X direction as the previous sub, it's in Y direction. See, it's a vertical load.
So for vertical load it will be Fy, and it will be not positive but negative 10,000. Now why 10,000? Because ANSYS is dimensionless, as you know, and you have to keep it like that. Okay, so now click on OK. So you can see this has been applied, the load has been applied. Now this will be screenshot again for the DJ Sanghvi students practical exam. And now close the structural, define loads will be closed. And now what you have to do, you have to do the solution. Okay, solution, go to solve current ls and click on OK. Yeah, so the solution is done. Great job. Now you have to check whether the solution is generated. So go to plot controls. Firstly turn on the element, so element display of element, and click on OK. So and click the ISO view for better judgment. And yeah, so this is now generated. Now go to general post processing for the results. Go to list plot results, counter plot, nodal solution for displacement, and X component, or this time we'll go for Y component because the element has displaced in Y direction, right? So we'll go for Y component of displacement and click on OK. So you can see this element has gone down the most, and hence it's most blue, and this element hasn't moved, so it has 0 displacement. ओके, सो हम लोग को डिस्प्लेसमेंट का ये दिख गया, ठीक है. नाउ गो टू काउंटर प्लॉट में ही एलिमेंटल सोल्यूशन एंड गो टू वॉन माइस स्ट्रेस. ओके, एंड क्लिक ऑन ओके. सी नाउ यहाँ पे स्ट्रेस सबसे ज़्यादा आएगा, दैट इज़ अ फिक्स्ड रीजन. वाई? तो यहाँ पे फिक्स्ड रहेगा एंड यू आर अप्लाइंग लोड हियर, सो दिस विल बी द रीजन विच हैज़ जीरो डिस्प्लेसमेंट एंड दस द स्ट्रेस विल बी डेवलप्ड देयर. और एज यू कैन सी थोड़ा इट्स राउंड अबाउट स्ट्रेस एंड उसका वैल्यू इज़ 1269. सो इफ़ यू वांट टू चेक द वैल्यू, go to list results, nodal solution or elemental solution, and stress, and click on von Mises stress and click on OK. So see, now you get these all nodes, so you have to check for which node. So go to plot controls, numbering, and node number should be turned on, and click on OK. Now as you can see, there is no difference here. So firstly I'll just turn off the elements because it's creating a bit of noise in the screen. I will turn display of element off and click on OK. So now you can see, and I'll do this front view. So as we have 100 elements now, I have to zoom to this region, right? So you can select this option, zoom model, and select this region. Okay, so now this is the node number 1. So for node number 1, what was the list result? Go to von Mises stress, click on OK. Yeah, for node number see, this is for element number 3, so you have to find where is element number 1. So element number 1 will be mostly at the end, and this is because it has the highest number of stress, right? So once you find it, you can verify the values, or else currently it will be a bit of task to be finding it. Just give me a minute, I'll just see if I can find it. Yeah, see here it is written as element number 1 and element number 3. So it is what it denotes is the stress at these both are maximum, and that is 1269. Got it? So 1269 is our maximum stress, and minimum stress will be generated at the last end. So again I'll go to zoom model, and I'll bit zoom out, but I have to zoom into this region. I'll click on this. So this is node number 4. So where will be node number 4? It will be at the end, because in the model also it is at the end, right? So see, it's node number 4, and node number 4 has max stress of 6.374. So this is a calculation for practical number 2, and thank you. See you guys again. Bye bye. Later.